हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया टेक। तो ओडिया टेक रो आज एक न्यू एपिसोड को आपन को स्वागत जनाऊँगी। लास्ट एपिसोड रे हमें देखिथिले फोर्टिगेट रो बेसिक फोर्टिगेट को डिटेल्स रे जानिथिले तार डैशबोर्ड ऑप्शन विषय रे। तो आज हमें फोर्टिगेट को कॉन्फ़िगरेशन करिवा तार गोटे नॉर्मल एनवायरनमेंट पई। तो डेरी न करी चलो तो स्टार्ट करिवा। तो फास्ट आमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे आमे नहीं जीवा वेबट्रम आमे विलान सह कॉन्फ़िगर करिवा। तो हमको तीनटा विलान नबा। वेबट्रम आमर हो गला फोर्टिगेट डिवाइस, तापर गोटे सिस्को स्विच, तापर आमर रही गला इंटरनेट। तो चलंतु कॉन्फ़िगर करिवा। सॉरी, कनेक्टिविटी दबा पूर्व हमें डिवाइस को स्टार्ट कर दबा, क्या डिवाइस स्टार्ट होगा पे किसी टाइम नबो। कम्युनिकेशन 0 1 0 1 2 0.3 पोर्ट 2 को दबा, पोर्ट 1 दबा। तो इटा सॉरी इंटरनेट जीवा 192.168.1.1 VLAN 10 2.1 VLAN 20 3.1 VLAN 30। फर्स्ट हम एंड डिवाइस को एडिट करिवा। एडिट कॉन्फ़िग हमर 1.1.1 पब्लिक DNS दे दबा 8.8.8 1.1.1 Control C save, edit config Control V 2.2 2.1 save। मिस्टेक हो जाए 1.1 ओके। एडिट 3 सॉरी 3.1 3. हमारा एंड डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गला।
तो ये जीवा स्विच को तो चलते स्विच रो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करदबा एनेबल configure Vlan first 10 name cells Vlan 20 name IT Vlan 30 name marketing exit हमर तीनटा VLAN क्रिएट हो गला हमें एबे हम असाइन करिबा इंटरफेस को VLAN सह कॉन्फ़िग तो हमर फर्स्ट 0.0 इंटरफेस G 0/0 switch port access VLAN 10 switch port mode access 8 exit interface G0/1 switch port mode access switch port access VLAN 20 exit interface G0/2 switch port mode access switch port access VLAN 30 exit हमारा G0/3 कनेक्टेड अच्छी फायरवॉल सह तो इंटरफेस G0/3 switch port mode trunk कना ट्रंकिंग जदि ए पोर्ट ट्रंक न होची ताहले हमर सब VLAN पैकेट को फॉरवर्ड करिवो नाही आपण जानि छथि ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक थिले ही VLAN एक्सेस हुए switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk exit हमें सो इंटरफेस ट्रंक ले देखीदेले GI013 ट्रंकिंग मोड रे अच्छी सो VLAN ब्रीफ तो मोर 1 डिफॉल्ट अच्छी 10 अच्छी सेल्स 0.0 20 अच्छी IT 30 अच्छी मार्केटिंग तो हमारा स्विच मोड रे काम शेष एबे हमें जीवा फायरवॉल को तो फायरवॉल रे लॉगिन अच्छी सॉरी admin new password 123 new password 123 so system interface I'm 133
system interface, edit port 1, so set allow access http and firewall access 192.33 firewall access admin password 123 VM. Okay. Later. Don't show. तो हमें फर्स्ट हमारा इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करिए। तो पोर्ट नंबर 1 हमारा ऑलरेडी 1 लाइन रे अच्छी। पोर्ट 2 को हमें कॉन्फ़िगर करिबा। इंटरफेस 192.168.5.1 ये हमारा 5.1 नेटवर्क रहिबा 255.255.255.0 https ping DHCP सर्वर रहेगा 50 ओके तो हम एठी नुआ क्रिएट करिबा इंटरफेस VLAN रहेगा सेल्स इंटरफेस 2 सेल्स हमें देइछे 10 को VLAN ID 10 address 192.168.1.1 255.255.255.0 आपण माने एथिरे डायरेक्टली 24 भी यूज करि परिबे DHCP सर्वर दरकार नहीं। हमरो तीनटा VLAN हे गला तो नेक्स्ट हम DNS स्पेसिफाई .1.1.1 8.8.8.8 अप्लाई स्टैटिक रूट रे डिफॉल्ट रूट नबा हमर पोर्ट 1 डायनामिक ओके स्टैटिक रूट हो गला तापर हमें बे पॉलिसी तो इम्प्लिसिटी पॉलिसी लॉग एनेबल करिबा
नुआ रोल क्रिएट करवा VLAN पे इंटरनेट फॉर सेल्स incoming interface sales outgoing port 1 all flow base रहिबा ओके कॉपी पेस्ट तो आमर लगभग सब किसी कॉन्फ़िगर हो गला। एबे हम GNS3 रो वेबफ्रॉम रो टेस्ट करतबा। तो आमर विकिपीडिया खोली जाउची ता माने आमर कनेक्टिविटी ठीक अछि। तो देखंतु लास्ट टाइम एटी से भी 0 थिला वर्तमान सेल सिस्टम 4.4 GB रो ट्रैफिक मूवमेंट करूची 1.07 मार्केटिंग 310 KB IT। तो आमर कॉन्फ़िगरेशन वर्तमान प्रॉपर हेच। तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउ किछि एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देखिबा जो तरे कि आपनकर सिक्योरिटी रहिबो, वेब फिल्टर रिलेटेड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन फिल्टर रिलेटेड सिक्योरिटी, IPS IDS या ऊपर देखिबा। थैंक यू।